हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अतुल वर्मा। और आज मैं जो आप लोगों से बात करने वाला हूं वो एक नए कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। और 12th के बाद आपके लिए, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बेहतर ऑप्शन है। और ये कोर्स 4 साल का है, जैसा कि नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसकी उसको ये साथ अलाइन है। तो इस कोर्स का नाम है बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑनर्स। एंड इसको रेगुलेट करता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरसीआई बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ये आता है। एंड इस कोर्स को करने के बाद में आरसीआई का लाइसेंस आपको मिलता है एज ए क्लिनिकल असिस्टेंट clinical psychology with separate CRR category from the clinical psychologist, because clinical psychologist is a higher qualification. So ये कोर्स बहुत ही पॉपुलर है और इसी साल यानी कि 2024-25 से स्टार्ट हुआ है, और जो आपको आरसीआई लाइसेंस दे सकता है। तो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, पर्पस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये आज जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये 2025 है, और इस 2025 में आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने को इसको चलाने की जो अनुमति है वो मिल गई है। तो पर्पस क्या है इसका? इट इज डिजाइन टू ट्रेन फ्रंट लाइन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। जो फ्रंट लाइन प्रोफेशनल्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, उनको ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। और जो एम है इसका, मेंटल हेल्थ प्रमोशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस, बेसिक असेसमेंट एंड साइको एजुकेशन, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो यूजुअली कोई भी आप ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे तो रहती हैं। ग्रेजुएट्स कैन नॉट एंगेज इन एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिसेस like psychotherapy, certification, neuropsychological testing, that kind of things you cannot get engaged. But at graduation level, if you want to work somewhere, so this is the best degree in clinical psychology field. And then ये इसका जो करिकुलम है, दैट इंश्योर्स इथिकल बाउंड्रीज एंड प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज इन वेरियस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. So after completing this, you can choose any field in psychology. And then most important thing, that is eligibility. Eligibility इसकी जो है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए जो हमें, वो 12th ग्रेड विद साइंस स्ट्रीम चाहिए, और हमें होनी ही चाहिए, इसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस टेस्ट, एंड दैट विल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। जो यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम को चला रही है, वो लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट, मतलब इसका एंट्रेंस ले सकते हैं, या जो भी इंस्टीट्यूशंस इसको चला रहे हैं वो उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका लेंगे, और बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट द एडमिशंस। अब इसकी जो इस जो कोर्स में है, कौन लोग आपको पढ़ाएंगे? तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो आरसीआई रजिस्टर्ड होंगे वो आपको इस कोर्स में पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बेहतर फैकल्टीज मिलने वाली हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की, जो आपको पढ़ने में इस तरह के कोर्स में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, सो आपको एक बहुत जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको आपको समझ, क्या कहते हैं, समझने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि दे आर द प्रैक्टिशनर्स, दे डू प्रैक्टिस। सो इन दैट केस यू विल गेट ऑल द like practical knowledge with them, and that will be helpful for you to understand how to implement different things, you can say different theories into practice. And they will also supervise you in clinical
like internships and training, and you will get different kind of field exposures like in schools, rehab centers, community settings. In that that kind of thing you will get. Then अगला क्वेश्चन आता है कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स एंड व्हाट यू कैन नॉट डू. So first is like you can do like mental health awareness campaign, basic screening using rating scales आप वो कर सकते हैं, psychological first aid आप provide कर सकते हैं, psycho education, life skill trainings that you can provide, and simple assessments like behavioral checklist kind of thing you can do, and you can support caregivers and assist in community mental health program. Understand, uh, like mental health area is still untouched. That is why you will see कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना दूसरा प्रोफेशन छोड़ के मेंटल हेल्थ फील्ड में आते हैं, एंड बिकॉज दे आर सीइंग देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज also, and with opportunities you have a satisfaction to help others. That is one add-on with psychology, and these are the things that you can do. And now I am coming to what they cannot do. Like they cannot do independent clinical practice, and they cannot do projective tests and neuropsychological assessment kind of things. They cannot do like diagnostic psychotherapy, disability certification they cannot do, and structural clinical interviews and advanced rehabilitation or therapy. So definitely when you are a graduate, then you cannot do the things that require more skills. It is like if you are MBBS, you can provide certain medicines and everything, but if you are eye surgeon, you can specifically work on eye, or you can perform the surgeries. So similarly, the this B.Sc clinical psychology course is there. Now I will little bit talk about this uh, the what like curriculum basically, and what you will study in these and in these 4 years. So I will though it is a semester wise course, but I will divide it in year wise. So in first year you will learn foundation of psychology, that is required because many of the person, like they will won't know, they won't be uh, having um, like this psychology subject earlier in their studies. So foundation of the psychology, like that you will study, and then system and theories of psychology. These are the basically theoretical foundation you can say, and then social and community psychology, behavioral communication skills, and practical lab based sessions you will have. And here too you have personality theories, lifespan and development, and educational and positive psychology, health psychology, applied psychometric testing, psychological assessment, and community surveys that you will learn. And in year third, you will learn research methodologically and methodology and statistics, psychopathology first and second. Yani in one semester you will have one, and then in two, then psychological testing in a similar way, and computer application in research, clinical and community training. So that so now from theoretical background to gradually coming to research, understanding research and the practical aspect. And year 4, clinical assessment, interviewing, diagnostic systems, clinical psychology, you will learn rehabilitation psychology, you will learn ethics in mental health services, that will be taught to you, and long-term internships like 3 to 6 months of internship you will have, and dissertation. And also dissertation is a small research work you can see, and assessment and evaluation also will be done for theoretical and practical aspect both, and dissertation in the last final year, and there will be project work, presentation, and like midterm exams. That kind of assessment process will be there. And one most important thing is this course is regular, because you cannot learn a skill online. So it is strictly you can say offline and regular mode.
So these are the few details about the B.Sc clinical psychology course, and there are a lot of universities related to like not related, basically they are starting this course. Uh, so most prominent university you can say is like MIT University, and they in most of the universities they are starting this course, so you can check with that. And there are other uh, places also where this course is going to start, and you can check the RCA website. So this was for today, and we'll get back to you with other details, and in case you have any query you can just comment on this video, and we will get back to you, or you will provide you the information related to like these courses. Thank you very much for joining us.